स्माइल मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये अगले 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में हम क्या बेसिकली करने जा रहे हैं, हम सब एक ऐसे टूल की सर्च में हैं जिसके अंदर जितनी भी अवेलेबल थेरापीज़ हैं, जिनकी पिछले 3 दिन में बात हुई है कि क्या हम इस सभी थेरापीज़ को किसी एक टूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उस टूल से बहुत इजीली डिजीज़ को टैकल किया जा सकता है। हम इस टॉक में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सुजोक इज अबाउट अल्टीमेट हीलिंग टूल वेयर ऑल द थेरापीज विच वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ कैन बी इंटीग्रेटेड and we can tackle all the disease very easily. So many disease, so many therapies, and we are looking for the final answer. Find the ultimate instrument and integrate all the principles of therapies into it. The ultimate tool of healing, Su Jok. Nature's principle is mercy. Mercy means there is more assistance given through love than through merit earned. What should be the qualities of the ultimate tool of healing? It should be readily accessible to all. It should integrate all the therapies into it. It should show instantaneous results, and it should be able to cure all the diseases. Professor Park Jae-woo, the inventor of Su Jok, he proved that our hand and foot have that quality that all the disease can be simply tackled with our hand and foot. This I am going to prove in front of you. It is a Korean word. Su is hand and Jok is foot. One question I will ask you. There are so many parts of the body we have. इनमें से ऐसा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो आप दिन में कम से कम 10-15 हज़ार बारी देख लेते हैं? अपनी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है? हैंड. ओनली दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं. अदरवाइज रेयरली वी लुक एट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. दिस पार्ट वी आर लुकिंग सो मेनी टाइम्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. Now first I will prove that this hand, how it is absolutely similar to the body, and then I will show you numerous number of applications. It is your imagination, it is your intention to use this hand. You can use it numerously. Next. Similarity in the number of the protruding parts. अभी body के अंदर में trunk है, there is one trunk and 5 parts are protruding from the body. There are 5 parts which are protruding out from the body. One is head, there are 2 arms and there are 2 legs. So there are 5 parts which are protruding out from the trunk. This similarity is there in the hand. Hand has a central palm and there is a thumb and there are 4 fingers which are protruding out from the palm. So in this way, 5 protrusions from the body, 5 protrusions from the hand. Next. Similarity in the location level of the protruding parts. Head is the topmost in the body. Intermediate is the arms and legs are the most downwards. Same thing, thumb is quite upper. The index finger and the small finger are the intermediate and the most lower is the central 2 fingers. Next, similarity in the direction of the protruding parts. The head is going in the opposite direction and all other 4 legs as well as arms are going in the opposite direction, which means head is going towards sky but arms and fingers are going downwards. Same is in the hand. Thumb is in the opposite direction and all other 4 fingers are in the opposite direction. They are going downwards. We are more fairer from the front. हम आगे से ज़्यादा गोरे हैं और पीछे से कम फेयर हैं, थोड़ा सा सांवले हैं पीछे से, क्योंकि ये नॉर्मल यिन यांग सरफेस है बॉडी का. नॉर्मली बॉडी में आगे से फेयर है बॉडी, पीछे से कम फेयर है. सेम इज इन दी हैंड. हैंड इज आल्सो फेयर इन दी फ्रंट एंड लेस फेयर फ्रॉम द बैक. दिस इज आल्सो सीन इन दी हैंड. नेक्स्ट. फॉरवर्ड बेंडिंग. I can bend like this, but I can't bend backwards. Same is in the hand. You can bend the hand front, you can't bend it back. Next, similarity in the proportions of the protruding parts. Head is the smallest, legs are the largest, and the arms are the intermediate. Same here. Thumb is the smallest, central 2 fingers are the largest, and the index finger and the small finger are the intermediate. Next.
similarity in the number of segments and joints of the protruding parts. अभी आर्म्स के कितने पार्ट हैं? टोटली 3 पार्ट्स हैं, फोर आर्म एंड द हैंड. लेग्स के कितने पार्ट्स हैं? थाई, लेग, लोअर लेग एंड द फुट. सेम इज इन द फिंगर्स, देयर आर 3 पार्ट्स. Agreed? Yes. Anybody confusion? In the thumb we have only in the upper part, which is the neck and the head, we have only 2 parts. One is neck, one is the head. Thumb has got not 3 parts, it has इसमें 2 parts हैं, lower part and the upper part. How many major joints are there in the arms? Major joints: shoulder joint, elbow joint, wrist joint. How many major joints are there in the legs? Hip joint, knee joint, ankle joint. Same is in the fingers. There are 3 major joints. How many joints are there in this part? One is lower joint, then a lower neck joint, upper neck joint. These are the 2 major joints in this part. Thumb also has got 2 joints, lower joint, upper joint. Next, line of symmetry of the body and hand. Half of the body, this body, left body is similar to the right body. Same is in the hand. Left part of the hand when divided is almost similar to the right part of the hand. Similarity in the relations of the protruding parts to the line of symmetry. If I draw a line of symmetry, legs are much closer to the line of symmetry and arms are quite far away from the line of symmetry. Same is in the hand. If I draw a symmetrical line, the legs are quite close to the central line, और जो आपके दोनों इंडेक्स फिंगर जो हैं और स्मॉल फिंगर हैं वो सेंट्रल लाइन से काफ़ी दूर हैं. नेक्स्ट, which means we can prove by all these examples, thumb is the head. Agreed? Do you agree? Yeah. Yes. Thumb is the head. Next, displacement of the thumb in relation to the palm. Actually, the actual thing is, if I ask you one question, can anybody answer? Why thenar eminence is more prominent in the hypothenar eminence? हमारे हाथ का ये हिस्सा ऊंचा क्यों उठा हुआ है दूसरी तरफ से? Its answer is only there in the Su Jok. Hand was created actually like this. जो chest area था वो ऊपर की तरफ था, but to make the grip, God displaced the chest part of the hand into the abdomen part. So there is a overlapping. You can see there is a overlapping of the chest and the abdominal part. That's why this is the only answer in the world why thenar eminence is more prominent than the hypothenar eminence. Next, from this only standard system of the correspondence of Su Jok was created, where whole of the body is shown in the hand. So beautiful. Hand has been made, hand एकदम absolutely similar बनाया गया body. इतनी similarity किसी और part में नहीं दी गई. Why? Can anybody answer? This is the only part. It is so similar to the body. No other part is showing the whole body. Why? Who created this hand? He created this hand. Why he gave so much of similarity here? Because this is the only part we see 1,000 times, 10,000 times हम अपने दिन में देख रहे हैं इसको. That's why it is his eagerness. उसको जल्दी है बताने के लिए. You learn. This is the message. All is here. Next, projections of the endocrine I will be talking later on. Next. So which means hand is similar to the body 100%. The law of resonance, all is connected to all. Disturbance, now how Su Jok works, we will understand the mechanics. The disturbance in the electromagnetic field of the body creates a disturbance in the electromagnetic field of hand in the form of appearance of a tiny globule. See, hand is totally similar to the body. The person who is more similar to me means अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मैं अभी यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत हो जाए, तो यहाँ पर आप सब लोग, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी ह्यूमन बीइंग हैं,
तो अभी मेरे चेस्ट में पेन हो जाए तो सभी लोग दौड़कर आएंगे कि क्यों? बिकॉज आई एम सिमिलर टू यू, दैट आई एम ह्यूमन बीइंग. बट इफ सम ऑफ माय रिलेटिव इज सिटिंग हियर, he has more similarity, he is more connected to me, he will be more affected, he will be crying coming here and helping me. And suppose my wife or my mom is there, it will be like anything, which means more similar you are, more you are affected. So if hand is so similar to the body, I proved it, literally I proved it. Hand is 100% similar to the body. If you want one, I can give 1,000 more proofs. Even I can prove, nobody can, no, there is no other answer in the world why this finger was made smallest and why this was made largest. Nobody can answer it. Only the person who knows Su Jok can answer that. So which means if hand is so similar to the body, if body is affected by some disturbance, which we talked about, Reiki energy or energy field, there is some disturbance in the electromagnetic field of the body, same disturbance will appear in the hand. The law of resonance, all is connected to all. Now how that disturbance will be seen in the hand, it will appear in the form of appearance of a teeny globule in the hand. Next, suppose somebody has affected liver, the same disturbance will be there in the liver showing area of the hand. Somebody has headache, it will be affected in the hand. Somebody has the spleen problem, it again will be affected in the hand. How? Next, there will be appearance of the tiny globule. This we will teach you later on. I will be talking about it. You can feel that. With us, we have a special instrument which we press that part and this. अब यहाँ पे electromagnetic field में tiny globule appear कर गया hand में. अभी क्या करना है? इसको correct करने के लिए hand is our remote control. You press the button. You press the button. You press here. You can feel that globule. Oh, this patient has a liver problem and I can feel there is something different. There is hard part. Something is hard here. You press the remote control and the disease disappears. When a child goes to school, mother will make everything ready for him. She will उसका बैग तैयार करेगी, उसका टिफिन तैयार करेगी, सब कुछ परफेक्ट वे में देगी कि मेरा बच्चा हैप्पी जाए स्कूल में या हॉस्टल दे रही है. In the same way, when we were created, our Father gave us the remote control that you can actually cure all the problems from here. All the problems. He has already given it. Just we have to find out. And why he gave here? Because this is the only part we see. So his eagerness, unimaginable. Next. Now hand and foot are designed as a remote control which has curative power and can take any shape as per our imagination and intention to cure the body, mind and soul. Now this lines I am going to prove in front of you. हैंड और फुट को गॉड ने एक रिमोट कंट्रोल की तरह डिजाइन किया है कि आप इस रिमोट कंट्रोल का कितना यूज कर पाते हैं, कितना ज्यादा यूज कर पाते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन और इंटेंशन के ऊपर है. अब यहाँ पे हम वो अपना पोटेंशियल देखेंगे कि हैंड और फुट को किसी भी शेप में लिया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है. मैं सारी थेरापीज को इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ हैंड के अंदर में, वेदर इट इज चाइनीज एक्यूपंक्चर, वेदर इट इज नाड़ी सिस्टम ऑफ द योगा, वेदर इट इज चक्रा सिस्टम ऑफ Indian healing, whether it is allopathy, whether homeopathy, whether siddha, I am going to integrate in this one remote control now. Next, the master weapon, its application, Su Jok. Chinese meridian, we all know, they have a well-developed system of 5 elements, and all the Chinese meridians are paired and are seen in the body. And the Chinese meridian therapy is one of the most advanced form of therapy in allopathic system, at least Harrison principle of medicine, जो कि बाइबल है मेडिसिन का. जब वो सारी थेरापीज के बारे में लिखता है तो वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसी ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुछ लिख देता है, बट इट्स रोल इज कंट्रोवर्शियल एंड में लिख देता है. बट चाइनीज एक्यूपंक्चर के बारे में हैरिसन लिखता है इट इज इफेक्टिव इन एट लीस्ट क्यूरिंग द पेन. दिस इज सो एडवांस सिस्टम. नेक्स्ट, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज. You are applying the needles on the whole body. My God. Let's study. Can we plot it on the hand? Chinese meridian. Yes. Next. We plotted all the meridians on the hand. All the Chinese meridians were just
plotted on the hand because I proved hand is similar to the body. All the Chinese meridians have already been plotted on the hand, and now the simple form of acupuncture which we use is next. We just put needles on the hand. So beautiful. There is no need to put needles on the body. Just put needles on the hand. And the effect is like anything. Even more effective than Chinese acupuncture because this is his intention. You don't touch the body. There are internal organs. यहाँ हार्ट है भैया, यहाँ लीवर है. नीडल डालोगे क्या होगा? कभी अंदर टिक कर जाए. आप यहाँ करो ना, रिमोट कंट्रोल दिया है. रिमोट कंट्रोल दिया है. Next, Indian chakra system, beautiful, so advanced. Chakras control the whole body, and it is the most advanced form of healing system ever existed. So I don't know Reiki. I don't know any energy form of healing. Can I affect? I have already this remote control, and what we did next, we mapped the chakras on the hand. Chakras mapped on the hand. Suppose I read a little literature about chakras. कुछ पढ़ लिया, मैं हमने पढ़ाया सारा डिटेल में. अब मुझे पता चला भैया अस्थमा हो गया. अस्थमा हो गया पेशेंट को. अनाहाता एक्सेसिव है. एक्यूट डिजीज चक्रा इज एक्सेसिव. अभी मुझे नहीं रेकी आती, मैं एक्यूट नहीं हुआ हूँ, मैं कोई और चीज नहीं जानता, बट मेरे पास एक गिफ्ट है. किसका गिफ्ट है? उसका गिफ्ट है. उसका मेरे को ऑलरेडी वो जो पैदा हुआ देख के भेजा भैया, यहाँ से सब कंट्रोल करो. अब नेक्स्ट सिंपल सी बात है, एवरीथिंग हैज अ पोलैरिटी इन दिस वर्ल्ड. वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव. मैग्नेट्स आर एवरीवेयर. Even the fingers have the polarity. If this finger is positive, this will be negative. This will be positive. This will be negative. These fingers can be used as a magnet. These can be used as a magnet. Next, I will put simply one finger. If this is positive, which they teach us. My masters taught us which finger is actually North Pole and which is the South Pole. We have all studies. So suppose this is the chakra is excessive, fever, asthma. I have mapped Anahata chakra. I just place the negative, the south pole here, and it is sedated. Next, now Indian Nadi system, Ingla, Pingla and Sushumna, the most advanced system. अगर कोई बंदा स्वर जानता है कि राइट स्वर चल रहा है, लेफ्ट स्वर चल रहा है, और बंदे की प्रॉब्लम उसके साथ से कुछ रिलेशन निकाल लेता है, तो जस्ट उसको अगर बोल दे कि तू उसके उल्टी तरफ लेट जाओ, स्वर चेंज करा दे, तो प्रॉब्लम में 75% to 80% रिलीफ वही आ जाता है. हमने इंडियन नाड़ी सिस्टम को स्टडी किया और इंडियन नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी या इंगला पिंगला सुषुम्ना को हमने हैंड पे प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट इंगला पिंगला एंड सुषुम्ना प्लॉटेड ऑन द हैंड. पेशेंट आया, भाई सारी राइट बॉडी में दर्द है, मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है, ठीक है. व्हाट वी विल डू, वी हैव टू फिंगर्स. Next, we have plotted already on the hand. We will put our fingers on the ingla pingla. This side is just putting the two fingers. After 5 minutes, patient says, "मेरा स्वर change कर गया." Beautiful, good. And his results I am not going to talk about. I am just showing you the application. This is so beautiful. Zone system. अभी बात करते हैं. God ने अगर body बनाई होगी, अभी आप क्या करते हैं कि आपको अपने कपड़े हैं, सामान है, सारा रखना है, तो पहले क्या करेंगे? पहले भाई अलमीरा लाएंगे या कपबोर्ड बनाएंगे, उसमें जो है लाइनिंग, ब्यूटीफुल लाइनिंग रखेंगे और उसके अंदर में फिर सामान रखा जाए. What he must have done is, he must have made an almirah boxes like box, 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 and in the box then he must have placed organs, beautiful organs. Heart, lungs, liver, spleen, but only after he could have made the almirah. Now we know there is energy flowing in the whole body. So what will be the paths? Like meridians are there, and there must be. अभी simple सी क्या बात है, meridians study करे नहीं है, इतना detailed है, नहीं study किए कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है, ये lines हैं, ये central line है, ये right line है, ये left line है, ये back line है. सिंपल सी बात है. तो देयर
is energy flowing around these lines. A patient comes to me, I have pain. The zone system says there must be some disturbance along this line. कोई बोलता है भाई यहाँ गैस हो गई बहुत ज्यादा, पेट में जलन हो रही है. What is this? Central line, front central line. There must be some disturbance here. Then there is, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया या हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो इसके करीब है तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल इस लाइन के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा. बैक प्रॉब्लम सभी को है, बैक लाइन के अराउंड कुछ प्रॉब्लम, एनर्जी इज फ्लोइंग. We just are going to make it simple. Next, so we made zone system. We mapped those energy lines and we checked it with some instrument which I will not talk about them. We mapped it. ये अलमीरा जो गॉड की बनाई हुई थी, हमने सिर्फ उसी का डिटेल किया कि भाई ये जो ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, हार्ट के यहाँ से एक सेंट्रल लाइन जा रही होगी, यहाँ से जा रही होगी, और हमने उसको प्लॉट कर दिया हैंड पे. इट इज सो इजी. नेक्स्ट, अभी हार्ट अटैक हो गया किसी को, उससे पूछा भैया दर्द कहाँ हो रहा है, दर्द यहाँ हो रहा है. अच्छा, दर्द ऊपर नीचे जा रहा है, दर्द ऐसे सारी छाती में जाता है ऐसे. तो अभी कपबोर्ड है, अलमीरा है, हमने मैप किया होगा सिंपल सा. इस लाइन के अराउंड वी फाउंड दिस लाइन इज एक्सेसिव. हाउ एनर्जी इज फ्लोइंग इन द विच डायरेक्शन, दैट आल्सो वी मैप. ओके, एंड जस्ट बाय प्लेसिंग टू फिंगर्स ऑन द हैंड लाइक दिस, वी आस्क हाउ इज योर पेन. He says pain is 80% better. Wow. And the effect of Su Jok is so fast. So fast. We just ask within 30 seconds. What is the change? या तो बढ़ जाएगा, अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट है, आपने सही लाइन पकड़ ली है, within 30 seconds he will change. या तो बढ़ गया या कम हो गया. अगर भैया बढ़ गया कोई बात नहीं, जस्ट उल्टा कर दो. बहुत बढ़िया, अगर बढ़ गया जस्ट उल्टा कर दो. पोलैरिटी will reverse. By using the fingers. By using the fingers. If we had, this is the plotting, what he could have done. He must have made an almira. In that, he must have placed the organ. We are not concerned. मेरे को नहीं आता भैया, मैं ले मैंने, मुझे नहीं पता हार्ट क्या है, मुझे नहीं पता लीवर क्या होता है, मुझे नहीं पता स्प्लीन क्या है, मुझे पता छाती में दर्द है, चेस्ट में पेन, और मुझे पता है एनर्जी रिवॉल्व कर रही है. That only I know. So I know that just the cupboard. Okay. No need to learn the heart. He never wanted, because nature's principle is mercy, which means more assistance is given through love than through merit. You don't need to be a big doctor to heal somebody. All is given here. All is given. Everything is given here. Next, we studied the mudra therapy, mudra system. Great advancement in the Indian yoga system, and it is a branch of Su Jok because it is from the hand. We studied mudra system in details. अभी इतनी मुद्रास नहीं पढ़ सकते भैया, योगा वाला पढ़ेगा. इतनी मुद्रास, and we made generalizations on a theoretical, on a strong background. Next, mudra system was studied in detail, generalization done. Left, we know right brain controls the emotion, left brain controls the physical part, and reverses in the body. Left hand must be having influence on the mind disease, right hand must be having influence on the body disease. Next, now if we study the fingers, now I am going to give you a very powerful tool. I will give you a simple tool how to cure acute disease, how to cure chronic disease. Simple. अगर हम यहाँ देखिए, चारों फिंगर्स को आप मिला लीजिए, अंगूठे से जोड़ लीजिए कस के. अगर आप अपनी इन सभी को जोड़े हुए में फर्स्ट फिंगर को उठाते हैं तो ये पूरी उठ जाती है. अभी मैं आपको बोलूं रिंग फिंगर, यानी थर्ड फिंगर को आप उठाइए तो कितना उठा सकते हैं? रिंग फिंगर को कितना उठा सकते हैं? नहीं. अगर आपने कस के किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इनशेकेबल. मिडिल फिंगर को उठा सकते हैं, ठीक है, उतना नहीं उठा सकते जितना फर्स्ट को उठा सकते हैं, एंड इसको भी उठा सकते हैं, बट इसका यूज फिंगर का, अगर ये उंगली किसी की कट भी जाती है तो भी हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट फिंगर. उठती है लेकिन उतनी नहीं उठती है. सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर हैंड की कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर? नो, इट इज द मिडिल फिंगर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाई? आपकी ये उंगली कट जाए, आप तब भी दो हाथ इससे लिख सकते हो, इन दो का यूज अपने आप आ जाएगा. ये फिंगर इन दोनों सबके बीच में कॉमन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर ये कट जाए
आप राइट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द, आई विल टॉक अबाउट जस्ट 2 फिंगर, ये सबसे ज्यादा उठती है और ये सबसे कम उठती है। अभी एक्यूट डिजीज सबसे ज्यादा चेंजेबल है। एक्यूट डिजीज क्या है? सबसे ज्यादा चेंजेबल, जो एकदम से ड्रास्टिक कर दे, अचानक या तो डेथ और द पेशेंट विल रिकवर 1 आवर में, या तो हार्ट अटैक के बाद बंदा बच जाएगा या मर जाएगा। क्रोनिक डिजीज क्या, हिलने को तैयार ही नहीं, भैया मैं नहीं हिलूंगी, वही की वही डॉक्टर दवाई दे रहा है, हीलिंग कर रहा है, बैठी है। Which means this finger must be representing acute scenario, and this finger, the ring finger, must be representing the chronic scenario. Next, in any acute disease, I will tell you, you have acute panic attack. This is the finger representing your acute panic attack. You sedate it. You place it below the hand. Panic attack will go. I am just talking about the philosophy. This is acute, even any acute event, any acute back pain, any acute sciatica pain, just sedate it, the first finger. It is representing your acute disease. You have chronic asthma. Next, you have chronic rheumatoid arthritis, you have SLE, or you just sedate the ring finger of right hand. You have chronic depression, not changing, you sedate this finger. This is the generalization done on after the detailed study of the mudra system. We are just using all the system and integrating into one. I am not telling that this is wonderful, I am just telling I am integrating into a wonderful tool. Next, Su Jok in emergency. I am talking about that ultimate tool. If you already have, can also be used in emergency. अभी किसी को अरेस्ट हो गया, बंदा गिर गया, अभी आएंगे भाई डॉक्टर आएंगे, टीम आएगी, सीपीआर करेगी, धक 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 कर रही, और मुंह से ब्रीदिंग लेंगे. You can do through hand. You just massage the lung inside, outside, inside. You can do it, and it is very effective. We have used in our ICU. Next, you can massage the heart. If you know exact location of the heart, while the doctor is doing CPR at the physical level, you can do CPR at the metaphysical level. I used allopathy in Su Jok. What happened? One patient came to the emergency. I saw his pupil, उसके आंखें फैली हुई थी, कोई नब्ज नहीं है, कोई बीपी नहीं है. हमने CPR शुरू कर दिया, रिजल्ट नहीं आया. हम अभी डिक्लेयर करने वाले थे डेथ. मैंने कहा यार 1 मिनट दो. मैंने एड्रेनलिन का इंजेक्शन लिया. एड्रेनलिन का इंजेक्शन लेके यहाँ हाथ के अंदर में एड्रेनलिन डाल दिया. And immediately it showed activity. There was activity on the ECG, and suddenly the patient breathed. My God, this is the application of Su Jok. CPR, cardiopulmonary resuscitation. You can do on the hand. You don't need to be expert. Like you should be a licensed one or this thing or that thing. You can simply do on the hand. Next, CPR. Yes, on the foot also you can do. If you have mapped the heart, you on the hand. You just by simply tuck 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 tuck, and you can see the activity on the ECG. Next, अभी किसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, हार्ट फेल कर गया. हार्ट फेल के अंदर क्या करते हैं? ट्रीटमेंट क्या देते हैं? बॉडी में पानी भर गया भैया, तो इंजेक्शन लैक्टिक्स का दे देकर पानी निकालते. उसको लैक्टिक्स दिए जाते हैं, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन दिए जाते हैं, पानी निकालते. अभी होना क्या, आपको हार्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या, हार्ट में कंजेशन हो गया, लंग्स में कंजेशन हो गया. तो अभी अगर पूरी नीचे की बॉडी का ब्लड अगर ऊपर ही ना जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? डीकंजेस्ट हो जाएगा. तो आप क्या करो, आपको ज्यादा नहीं पता, आपको पता ये 2 लेग्स है, यहाँ पे 2 रबर बैंड टाइप बांधो. अभी यहाँ पे मैं 2 रबर, पहले हम ये ट्रीटमेंट करते थे जब लैसिक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेशेंट को हार्ट अटैक होता था, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी रस्सियां बांधते थे. उससे क्या होता था, नीचे का ब्लड ऊपर नहीं जा रहा, तो हार्ट को रिलीव हो जाता. सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे 2 टॉनिक 2 रबर बैंड बांध दो. आफ्टर 10 मिनट्स ही विल टेल दैट आई हैव सम रिलीफ. He says you have the tool. How much you can imagine? What is your intention? Next, intracranial bleed में या hypertensive crisis में बीपी बहुत बढ़ गया, सिर के अंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, ब्लीड हो गया अंदर बहुत बड़ा.
सिर में प्रेशर बहुत बड़ा है, जब तक उसको लैक्सिस का इंजेक्शन देंगे या उसको मैग्नीटोल का इंजेक्शन देंगे तब तक देर हो जाएगी। डॉक्टर के पास तो जाना ही है, घर पे क्या कर सकते हैं? यू टेक सम स्मॉल ब्लेड एंड जस्ट पुट स्मॉल कट्स ऑन द थंब, ऑन द टू thumbs you put small cuts. He will say I am relieved because you have relieved the congestion from the head. Next, तेज बुखार हो गया, क्या करेंगे? भाई पट्टियां करेंगे, ठंडी ठंडी पट्टियां करो। आप क्या करो, दोनों हाथों के टिप्स को बर्फ के पानी में डालो, डालो निकालो, 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स, जस्ट सी द रिजल्ट, इट्स वंडरफुल। नेक्स्ट, सुजोक इन एरिथमिया, किसी को टैकीकार्डिया हो गया, हार्ट अटैक हो गया, 200 के करीब पल्स रेट हो गई, यू टेक द प्रोब, अभी क्लॉकवाइज हुआ तो बढ़ाने का, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो घटाने का, एंड स्टार्ट मसाजिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा। You can see we have observed 200 heart rate has gone down to 150. In a case of bradycardia, और नब्ज कम हो गई, 40 पे आ गई, 30 पे आ गई। अगर आप हार्ट का पॉइंट जानते हैं, उसको क्लॉकवाइज मसाज करनी शुरू कर दें, तो हार्ट की नब्ज बढ़नी शुरू होते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेदा आल्सो यूज्ड इन सुजोक, वंडरफुल। 10 महाभूत यानी तम, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, these all 10 Ayurvedic Mahabhut are also plotted on the fingers. Next, after a great study, we plotted them. This finger represents the Akash, this Prithvi, this Man, this Jal, this Tam. अभी क्या हुआ, किसी पेशेंट को आया, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा भैया तेरे को जो है प्रॉब्लम वायु में है, वायु के अंदर 3 चीज, अब क्या है आयुर्वेद में 3 चीज है, वात, पित्त, कफ। अभी भाई प्रॉब्लम वायु की है, वायु में या तो पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया या वात बढ़ गया। This joint will represent the Vata, lower will represent the Kapha, and the middle one will represent the Pitta. So अभी आपने डायग्नोस किया कि भैया वायु के अंदर में पित्त बढ़ गया, तो it's okay, great. Don't need to give medicine. You start massaging this joint, and with particular colors based on the 10 bacteria, we have given that colors to the every Mahabhut. You can just sedate that joint, उस पर कुछ पर्टिकुलर रंग लगा दीजिए जिससे पित्त उसकी कम हो जाए। टेंशन क्या देना है भाई, वायु के अंदर पित्त को सिडेट करना है, तो डन, नो नीड टू गिव मेडिसिन। सो दो किसको बन। नेक्स्ट, यूज ऑफ हर्ब्स इन दिस सुजोक, हर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन दिस सुजोक। आई विल टेल यू वंडरफुल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। किसी भी बंदे को क्रोनिक खांसी हो, खांसी ना जा रही हो, आप मस्टर्ड प्लास्टर का यूज कर सकते हैं। क्या करें, सरसों ले लें, सरसों को कूट लें और शहद के साथ मिला के लेप बना लें, और उस लेप को यहाँ पे लंग्स के एरिया पे लगा दें और ऊपर कॉटन लगा करके वो सो जाए। सुबह गर्म पानी से हाथ धो लें। सभी को पता है सरसों और शहद कफ में बहुत फायदा करता है। वी यूज इट इन सुजोक एंड रिजल्ट्स आर वंडरफुल। किसी बंदे की खांसी ना ठीक हो रही, हम ये दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। इट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ Sujok, it is actually the effect of that herb, but we are blocking everything in the hand. Next, use of seeds in the Sujok. God made kidney beans, राजमा को बनाया किडनी के जैसा, बकवीट सीड को बनाया लंग्स के जैसा, ग्रेप फ्रूट को बनाया पैंक्रियास के जैसा, वॉलनट अखरोट को बनाया ब्रेन के जैसा, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को बनाया आंख के जैसा, गुल्डन रोज सीड को बनाया हार्ट के जैसा। क्या इनको भी सुजोक में अप्लाई कर सकते हैं? यस, वी ऑल नो राजमा किडनी के लिए अच्छा होता है क्योंकि भगवान ने उसको बनाया किडनी की तरह है। अखरोट खाने से दिमाग को ताकत मिलती है, सबको पता है, लेकिन क्या इसको भी सुजोक में अप्लाई कर सकते हैं? यस। नेक्स्ट, अभी हार्ट की डिजीज है, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम है, कद्दू यानी कि इट इज कॉल्ड एज पंपकिन सीड्स, जो कि हार्ट की तरह की होती है, उसकी सीड्स को अगर आप हार्ट के कोरेस्पोंडेंस पे लगाएं तो उसकी जो एनर्जी जिसको रेजोनेट करती है, मैंने बताया लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, अगर हार्ट का शेप है तो इसकी जो रेजोनेंस पावर है हार्ट के क्लोज में है, तो इट विल रेजोनेट विद द हार्ट एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्योरिंग द हार्ट डिजीज। नेक्स्ट, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज इज राजमा सीड्स यू अप्लाई इन दिस। फुल बॉडी कैन आल्सो बी इन द वन फिंगर। एक फिंगर के अंदर भी पूरी बॉडी होती है, एक फिंगर के अंदर फुल बॉडी होती है। दिस इज इंसेक्ट सिस्टम ऑफ द सुजोक। नेक्स्ट, पूरी अगर आपको कलर थेरापी, हमने कलर्स को यूज किया सुजोक में, आपको सिंपल सी बात बताते हैं, एक फिंगर में पूरी बॉडी है, यहाँ पे स्टमक का पॉइंट होता है, यू अप्लाई ब्लैक कलर हेयर, ब्लैक कलर लगा दीजिए, एसिडिटी चली जाती है। दिस इज द सिंगल फिंगर हैज फुल बॉडी। नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी।
अभी सिंपल सी बात मैं प्रूव कर देता हूं। मैंने आपके सामने प्रूव किया, पूरी बॉडी हैंड में, पूरी बॉडी हैंड में। अच्छा, हैंड के अंदर में अगर पूरी बॉडी, अगर ये पूरी बॉडी मान ले तो इसके अंदर हैंड कौन सा? ये है, ये है ना, इनमें हैंड है। तो इसका मतलब इस छोटे से पार्ट में पूरी बॉडी है, इस छोटे से पार्ट में पूरी बॉडी दिखाई गई है, फुल बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। पूरी बॉडी को इस पार्ट में दिखाया गया। दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज द पावर ऑफ सुजॉक, nano level, nanotechnology. Next, in last stage cases when the whole of the organ is destroyed, we talk of stem cell transplant. आजकल क्या बात करते हैं, भैया हार्ट तो पुराना खराब हो गया, स्टेम सेल डाल दो। अभी स्टेम सेल लगवाने जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, करोड़ों रुपया खर्चेंगे और स्टेम सेल डाले जाएंगे कि हार्ट नया बन जाए। We created Sujok stem cell system. Next, whole of the foot can be seen as kidney. Whole of the foot can be seen as kidney. Next, this is heart, whole of the hand showing heart. Everything is very clear, which wall, this is AV node, this is right atrium, everything. I told it is your imagination how you can use this remote control. It is up to you. Next, this is full brain shown on the body, full brain is shown in the hand, full brain. Next, lungs, आप ऐसे लगाइए, आपको पता चल जाएगा ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई ऐसे निकलते हैं ना भाई लंग्स में, इनको लगा के देखिए। Just it is the lungs, it is the lungs, full lung। जहाँ पे प्रॉब्लम है, MRI CT स्कैन के अंदर जहाँ प्रॉब्लम आई है, you can influence that। Next, this is the heart, this is the lungs। Next, this is the liver in stem cell system। Next, अभी आजकल बात होती है बड़ी बात, अभी मैम ने बात की कि हायर सेंटर्स को इन्फ्लुएंस बैक किया जा सकता है ब्रेन पे। We can map the whole brain in the hand, और सारे के सारे हायर सेंटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? देखिए। नेक्स्ट, सारे सेंटर्स, मेडिकल साइंस ने हर चीज के लिए एक सेंटर बना ब्रेन में मैप किया है कि ये जो 17 नंबर का सेंटर है ये विजन को कंट्रोल करता है। अगर किसी बंदे की आई साइट जाती जा रही है, अगर आप 17 नंबर के सेंटर को इलेक्ट्रिक शॉक दे दें किसी तरीके से, उसकी विजन पूरी वापस आ जाएगी, क्योंकि वो उसे कंट्रोल करता है। क्या हम सुजोक से इसको कर सकते हैं? यस। नेक्स्ट, we mapped it, we have already mapped all the centers, higher centers of the brain on the hand. This is the stem system of the Sujok. You bring any patient who has got severe problem, which is last stage, we will influence that particular center on the hand and it can be cured. Next, this is the master point for the cuff. आपको सबको पता है respiration medulla oblongata control करती है, जो कि यहाँ पर होती है। And in the Sujok, we map that master point, antitussive point. कोई भी बंदा कफ के साथ आ जाए, आप इस पॉइंट के ऊपर मेथी का दाना लगा के ऊपर उसके टेप लगा दीजिए, 5 मिनट के बाद कफ चली जाएगी। नेक्स्ट, एनिमल हेड सिस्टम। एनिमल्स की जो है सेंसेस बहुत एडवांस होते हैं। कुत्ते की सूंघने की ताकत, देखने की ताकत इनके एनिमल्स की ज्यादा होती है। We thought about it and we created dentistry in Sujok. Next, we created dentistry. जैसे एक शेर ऐसे करके खड़ा है, just like this. अभी ये 32 दांत, आपको दांत में कीड़ा लग गया, दांत खराब हो गया, दांत में ये हो गया, रूट कैनाल करना है, रूट कैनाल। अभी पेशेंट का मैं कल ही करके आया हूँ। क्या ठंडा लगता है, गर्म लगता है, कहाँ लगता है? इस मोलर ऊपर वाली अक्ल जाट जिसको कहते हैं, विजडम टूथ, उसमें ठंडा लगता है। I took 20 needles and I dropped with the inserter. I placed them on this. Tuck, 20 needles I placed. Then I took, after half an hour I asked, हाँ भैया रूट कैनाल कर दिया आपका, अब आप देखिए ठंडा पानी पी के गर्म पानी पी का नहीं। He was smiling that I am not kidding. You don't need to go to dentist. It is all there in your hand. Next, hand. The take-home message is hand and foot are designed as a remote control which has cumulative power and can take any shape as per your imagination and intention. Next, smile thanks to Professor Park Jehu. We feel blessed. Next, smile thanks.